Hey guys, do you want to know a quick tip which will help you to improve your score in IELTS speaking section tremendously? Well, in this video, that's exactly what I'm going to tell you. So without wasting any more time, let's begin. So guys, the best tip to improve your score in IELTS speaking section is by talking to a foreigner in English daily for at least 15 to 20 minutes. Now guys, how can you do this? You can do this through a website called Omegle. So guys, Omegle is a website on Google. You can look it up. It's Omegle, and on that website guys, there's an option for selecting country. So in that option, you can select either Canada, Australia, UK, New Zealand or USA. Then guys, a citizen from any of these countries will come live in front of you. Then you can talk to him or her about any topic and for as long as you wish. And guys, the best part is that this website is absolutely free, so you should definitely try it. और इस चीज से दोस्तों आपको दो बेनिफिट्स होंगे. नंबर 1, आपकी इंग्लिश स्किल्स डेवलप होंगी, आपकी स्पीकिंग स्किल्स डेवलप होंगी. और नंबर 2, आपका जो कंफर्ट जोन है आपकी नेटिव लैंग्वेज बोलने का या जो भी आपकी मदर टंग है उसको बोलने का जो कंफर्ट जोन है, आप उससे बाहर निकल आओगे. क्योंकि दोस्तों अगर आप IELTS स्पीकिंग सेक्शन के एग्जाम में सीधे जाके बैठ जाओगे तब दोस्तों आपको इंग्लिश में बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. क्योंकि दोस्तों आपको इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस नहीं होगी, क्योंकि आप घर पे भी बाहर भी हर जगह अपनी नेटिव लैंग्वेज में ही बात करते हो जो भी आपकी मदर टंग है. तो इसलिए दोस्तों अगर आप किसी फॉरेनर से बात करोगे डेली इन इंग्लिश फॉर अबाउट 15 to 20 मिनट्स, तो उससे दोस्तों आपकी इंग्लिश में बोलने की एक प्रैक्टिस ही बन जाएगी जो आपको अपने IELTS स्पीकिंग सेक्शन में काफी ज्यादा हेल्प करेगी. So that was it for today guys. I hope you liked this quick video, and if you did, please make sure to give it a thumbs up and don't forget to subscribe the channel.